to the supplier for receipt of the said services along with GSTR1, GSTR and 3B and electronic additional cash ledger. So that part will be taken care by my maker. So I am forwarding the query to the maker so he can reply the same. Forward query. Submit. Submit here. Done. So the application has gone to the maker and the maker is being instructed to make the necessary or upload the necessary document which has been asked by the customs authority. And upon uploading the same or replying the query, the maker will submit the same to me and I will be able to again submit the same with the digital signature to the customs officer. So why this process is required? Because for any duty-free procurement of goods or services, custom endorsement is mandatory under the GST regulation as well as under the SEZ regulation also. So all are requested to please file all the procurement of goods or services in the SEZ online system and thus get the endorsement of the customs authority for the same. सबके उसमें क्वेरी आना ही आना है. They will be getting a query. And accordingly, you're requested to reply the query and solve the request ID so that the custom approver can approve the recording आप कर रहे हो मैं करूँ? मेरे में नहीं हो रहा है ना. तो फिर आप स्पीकर We have still 2 minutes. So अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, I can मेरे maker ने already reply कर दिया, तो I will show you how to submit the query again submitted by the maker. अभी we have seen that मैंने custom ने query raise किया, maker को मैंने forward किया and maker has already replied me. So I will show you how to process the same.
प्लीज अनम्यूट योर आशीष जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है। आशीष जी, आपका अनम्यूट कर लीजिए। बाप रे, चालू भी हो गया क्या? अभी चालू नहीं है, जस्ट जो ज्वाइन हो गए उनको खाली दिखा रहा हूँ एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम कैसे है। वी विल स्टार्ट विद इन 5 मिनट्स। वो जो है ना ओपन, 1 मिनट। So maker has already replied the query. So I will be processing the same query. Now I have to go for, instead of forwarding the query, I have to select query response. External remarks में details attached. Okay, so if you want to see the attachment, you can click on the PDF file. The system will then download the same. मेरे में थोड़ा टाइम लगेगा। The time हो गया, 1 मिनट ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, चलो। टाइम लगेगा इसमें, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेते हैं। Let's start now, sir. या अभी टाइम है? नहीं, कर लेते, स्टार्ट कर लेते। सो वी विल लीव इट एंड वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। Most of people have joined. So everybody, welcome to the training session. Let us start. We will be covering only the major compliance, that is what is authorized operation, validity of LOA, acceptance and terms and condition, compliance of condition number which is mentioned in your LOA, GST थोड़ा सा, eligibility certificate, approval of list of services, RCM से IC, endorsement of invoice by customs authority जो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, जो देख रहे थे जॉइंट अभी प्रेजेंटेशन से पहले, that is in SEZ online system, it is online based. LUT under GST regulation to be filed for export of services which is mandatory under the GST regulation. Workflow हम अभी नहीं देख रहे because अभी थोड़ा clarity नहीं है from the FSCA. So let us start. Before that, I would like to clear that this is only for your educational and sharing knowledge. You are requested to please refer the relevant section notifications. The same can be downloaded from the website sezindia.nse.in. SEZ online-MPML के manuals है, उसमें भी आपको मिल जाएंगे, और updated rules and regulation can be downloaded from EPCS website, that is www.epcs.in, and FAQs are also available on that website. You can go through the FAQs and most of the queries are being answered by the GT, so it is very nice to go through that. For GST regulation, you can refer the website cbac.gov.in, and for CASES circular, you can refer the website cases.gov.in. There are various acts and regulation in this PPT. As I said, we will be only looking after the major compliances under the SEZ Act 2005 and SEZ Rule 2006.
SEZ Act 2005 came into effect on 10th February 2006, and after that, the main objective of SEZ was to promotion of export, promotion of foreign direct investment to earn foreign exchange, and creation of jobs. How you can see the hierarchy, the regulators are on the top, it is MOC, Ministry of Commerce. उसके नीचे Board of Approval रहेगा, single window approval, having all the authorities under the SEZ regulations. उसके नीचे Approval Committee having the authorities to approve LOA for SEZ units and other application of SEZ units, as well as it has the powers to approve the list of goods and services for co-developer and developer. उसके नीचे आ जाएंगे Development Commissioner responsible for administrative control of the SEZ and monitoring of the same, and other powers are being given under the SEZ regulation to him. उसके नीचे SEZ authority which is not applicable to GIF because the SEZ authority is mainly for the government SEZ. As this is private SEZ, so SEZ authority is not applicable over here. But for government SEZ like under SEZ, there is a separate SEZ authority looking after the SEZ. हेलो हाँ जी बोलिए. पीपीटी विजिबल नहीं हो रहा, मतलब विवेक कुमार जी दिख रहे हैं, बाकी तो कोई दिख नहीं, मतलब पीपीटी इज नॉट विजिबल सर. अभी is it visible now? यस Yes, now visible. Okay, fine. Sure. So, how will you define an SEZ? It is defined as a specifically delineated duty-free enclave deemed to be a foreign territory for the purpose of trade operation duties and tariffs. This definition is given under the Customs Act. Mainly, it is for trade operation duties and tariffs for custom transaction, as well as in the FEMA also it has been defined. SEZs are mainly to encourage the investment foreign, that is foreign exchange, bring foreign exchange, create employment opportunities, and provide a good infrastructures. Every unit has to compulsory mandatorily register themselves in SEZ online system. And आपका जो भी procurement है duty free, mainly duty free is to be reported in the SEZ online system, as well as आपका other जो भी applications are also required to be filed in SEZ online systems. Even removal, temporary removal, like if you want to take a laptop for work from home, has to be filed in SEZ online system. That is temporary removal under 50, rule number 50 has to be done. There are various charges for the same. जो नए units है, I think योगेश भाई ने उनका presentation लिया है, तो they are aware about this, and I would request them to go for the same. Create your maker, approver, and admin, so that you are able to file all the applications. Like सबसे पहले acceptance of LOA आएगा, फिर bond आएगा. After the physical bond has been accepted by the DC office, you have to upload the same in the SEZ online system. Acceptance of LOA करने से पहले please go through the LOA, that all the terms and conditions are proper. In some of the LOA there might be some restriction, like एक दो यूनिट में DTA का उन्होंने नहीं अलाउ किया था, तो then they have to get it amended. LOA के अंदर कुछ LOA में उनका activity was restricted at the IFSC authority request the unit to get it amended, and the same was amended. So I would request to go through the LOA very carefully, because उसके अंदर जो activity mentioned है, that is the main purpose, मतलब main क्या बोलेंगे ऑथराइज ऑपरेशन जो डिफाइन होता है वो वहीं से होता है कि एक्टिव दिस आर द ओनली एक्टिविटी व्हिच आर अलाउड, अदर देन दैट यू आर नॉट अलाउड. दैट इज कॉल्ड ऑथराइज ऑपरेशन under section 59 of the SEZ Act, rule number, read with rule number 19 of the said rules. The LOA specifies what service activities are allowed, permitted. That is the main thing, that LOA has to be for the new units. जो ऑलरेडी पुराने यूनिट्स उन्होंने किया ही होगा, the same has to be accepted. The terms and condition has to be accepted within 45 days day. So this is a reminder for the units who have not completed. You are requested to do the. This is the main first compliance a new unit has to do. So after completion of this
the unit has to go for submission of bond cum legal undertaking. Before that, थोड़ा जो नए हैं उनके लिए we will discuss what is authorized operation and what is broadbanding. So LOA सर्विस एक्टिविटी क्या अलाउड है आपका वो देख लिया आपने, एक्सेप्टेंस कर दिया 45 डेज के अंदर. फिर ऑथराइज ऑपरेशन जो मैंने बताया वेयर इट इज डिफाइंड वो आपने डिस्कस किया. अगेन इन द पर्टिकुलर स्लाइड यू कैन सी authorized operation means operation which may be authorized under subsection 2 of section 4 and subsection 9 of section 15. Unit का definition है. Why authorized operation is very important? Because now under the even GST regulation they have amended the IGST Act and they have included the word authorized operation. So now the IGST, that is GST exemption, will be now linked with the authorized operation. Earlier it was not linked, but now they have amended the Act and they have inserted the words authorized operation. So it is very important. Agar if you feel that your activity is not there, you are requested to apply to the DC for broadbanding. और जो पुराने यूनिट्स है जैसे सपोज मान लीजिए इफका आया उससे पहले जो एक्टिविटीज थे उसके अंदर अप्रूवल मिला है, देन दे कैन, इट इज एडवाइजेबल दे कैन गो एंड अप्लाई टू द डीसी फॉर अमेंडमेंट ऑफ एलओए एंड गेट द एक्टिविटीज जो भी प्रेजेंटली एक्टिविटीज कर रहे हैं. इफ इट वाज नॉट कवर्ड इन द earlier LOA, the same to be included in the application, and application has to be submitted to DC office. ये application को बोलेंगे broadbanding of your LOA. So the services which is not there has to be included in the LOA. Based on that, you are allowed for GST exemption under the IGST Act, that is called authorized operation. हाँ, LOA पे कहाँ पे लिखा होगा आपके LOA के अंदर ऑन द फ्रंट पेज ऑथराइज ऑपरेशन लिखा है, आइटम्स ऑफ सर्विसेज, वहां पे ये लिखा है ये ऑथराइज ऑपरेशन क्या परमिटेड है फॉर द यूनिट्स. अपने लिए तो क्या है कि ऑथराइज ऑपरेशन, बट अपने लिए ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अपने को ऑथराइज ऑपरेशन एनी क्वेरी वी कैन डिफाइंड डिस्कस. एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो कि वहां पे हो भी रही है. ये बाकी तो under SEZ regulation, the definition of export and import, you can go through this. तब तक any कोई किसी का कोई query है regarding authorized operation, we can discuss. हेलो सर बोलिए. सर मेरा ना एक SEZ अप्रूवल आया था एंड अकॉर्डिंगली फी पेमेंट जो होता है रजिस्ट्रेशन वो भी मैंने कर दिया था, जो 25,000 प्लस द टैक्स अमाउंट्स. तो उसमें ना अभी भी व्हेन आई एम गोइंग थ्रू द फर्स्ट पेज मेरा LOA पेंडिंग आता है. LOA pending. Take a screenshot of the same and send a mail to the dcsez_ag@yahoo.co.in. CC to me, requesting for approval of the same. वो शायद DC ऑफिस में अभी पेंडिंग है अप्रूवल में, तो जैसे ही वहां से अप्रूव होगा देन ओनली वो एरर रिमूव होगा. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम एंड सेंड अ मेल टू DC एंड कॉपी टू मी. हाँ सर वो मेल मैंने भेजा था. सो आई थिंक मुझे SEZ में से फोन आया था. दे सेड कि आपको पहले ना यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, एडमिन एंड यूजर, उसके बाद होगा शायद ये. और जब मैं यूजर क्रिएट करने के लिए दे टोल्ड मी फर्स्ट GST नंबर प्रोक्योर होना चाहिए. फाइन, गॉट इट. तो SEZ ऑनलाइन ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड ऑन 8th. उससे पहले भी वी विल ट्राई आपका एक इंडिविजुअल केस नीरव के साथ बैठ के, इज द NSDL गाय, उसके साथ बैठ के आपका जो यूजर क्रिएशन एंड ऑल दैट है वो आपका कंप्लीट कर लेते हैं. आफ्टर द प्रेजेंटेशन यू कैन कॉल मी टुमारो. So we can have a session with Nirav and jointly we can go through your SEZ online system. मुझे अभी login करना पड़ेगा. Login करने के बाद ही पता चला कि exact situation क्या है. तो we can sit tomorrow at 10 o'clock and go through your. ठीक है सर. आपको ना एक बार I will share some invite calls so we can close that tomorrow because Yeah, definitely we can. timeline भी आ रहा होगा. Done sir. Thank you. Okay. So now we move to the next slide, that is bond cum legal undertaking, which is very important condition of your LOA and SEZ rule number 22 because it is dealing with the exception, drawbacks and concession. If you do not execute bond, you are not eligible for duty-free procurement of goods and services or any exemption. It is one of the most important condition governing the approval granted to a unit, and it is execution of bond cum legal undertaking. For the new units, शायद आपने ट्रेनिंग लिया होगा. It has to be executed on a 300 rupees stamp
फ्रॉम गुजरात, नोटराइज्ड फ्रॉम गुजरात, सब टू बी सबमिटेड विद अ कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर के अंदर आपको मेंशन करना है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करना है, सो दैट द सेम bond can be expected as well as eligibility certificate can also be issued by the development commissioner office. Again मैनुअल करना है, ये मैनुअल के बाद में SEZ ऑनलाइन के अंदर फिर अपलोड करना है, और the same has to be again approved in the SEZ ऑनलाइन सिस्टम. The value, अगर किसी को डाउट है वैल्यू के लिए, तो there is a clarification already and defined under the same rule number 22. The value of the bond conveyance shall be equal to the amount of effective duties leviable on import or procurement of goods and services. Services भी included हो गया है, so both you have to consider in your valuation. And monitoring is the responsibility of the unit. And if you feel that जब जैसे किसी ने 50,000 का बॉन्ड कर दिया and उन्होंने procurement कर दिया थोड़ा ज्यादा, तो again as per the SEZ rule 22 they have to again submit a bond, that is called additional bond. It is defined as additional bond has to be submitted by the unit. And the same again जैसे एक्सेप्ट हो जाता है LUT सब डिटेल सबमिशन में आपको अपडेट करना है in SEZ online system. It is the responsibility of the unit to monitor the same. जो पुराने हैं, जो ओल्ड यूजर है, उनके अंदर ये ऐसा कुछ आएगा लेजर जैसा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। अगर नए वाले में आई थिंक ऐसा नहीं आता, बिकॉज उन्होंने उनका ऑलरेडी दे कैप्चर ऑल दैट गुड्स एंड सर्विसेज। एनी क्वेरी? सो ओके फाइन, वी मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आपका बॉन्ड एक्सेप्ट हो गया एंड आपने कवरिंग लेटर में लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू एज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, द डीसी ऑफिस विल इशू the eligibility certificate for Gujarat SEZ under the Gujarat SEZ Act. As why they are issuing under the Gujarat SEZ? Because delegation of power has been given under the Gujarat SEZ Act 2004 to the Development Commissioner to issue the eligibility certificate. सर एक BLUT में एक डाउट था, BLUT का कोई स्टैट्यूटरी डेडलाइन है क्या कि आफ्टर रिसीविंग LOA आपको इतने दिन में BLUT सबमिट करना है, या मंथ के ये महीने से पहले, मतलब डेट से पहले ही BLUT सबमिट करना है? बिकॉज आई थिंक BLUT यू हैव टू। So if you see the main heading, that is again I'm coming to the main slide, operate including आप जो रूल अगर रिफर करोगे उसमें लिखा है ऑपरेट इंक्लूडिंग अवेलिंग एग्जेम्पशन ड्रॉबैक्स एंड कंसेशन। पहले ऑपरेट का वर्ड नहीं था, नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट द ऑपरेट वर्ड हैज बीन इंक्लूडेड। सो अगर आपको SEZ में आके ऑपरेट भी करना है, ड्यूटी पेड लो के कुछ भी करो, आपको बॉन्ड करना है, सो इट इज इमीडिएटली, टाइम पीरियड इज नॉट डिफाइंड बट यस इमीडिएटली कर लेना। Immediately from when? After getting LOA? After getting LOA, obviously yes. No, but the situation happens that we take extension on LOA. So when we are taking extension of LOA, एक्सटेंशन ऑफ because LOA नहीं मिलेगा। मैं अगेन कमिंग वो नहीं मेरे नेक्स्ट सेशन में, पर मैं अभी आंसर कर देता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ LOA नहीं मिलेगा बिकॉज जैसे डेवलपमेंट कमिश्नर को पता चलेगा बॉन्ड नहीं किया, लिस्ट नहीं किया, दैट मींस दैट द यूनिट इज नॉट सीरियस टू ऑपरेट इन SEZ एंड उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। एंड देयर आर मेनी केसेस दैट DC has रिजेक्टेड ऑन दिस बेसिस। एक्सटेंशन मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक विदिन 6 मंथ, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में विदिन 6 मंथ होगा एग्जीक्यूट लिस्ट कब करोगे जब बॉन्ड होगा एग्जीक्यूट होगा तब। हाँ अभी लिस्ट डेट का आ गया। Rule 18.2 says that SEZ unit is required to submit a registered list date, self-attested, to the DC office with a covering letter. तो 6 महीने के अंदर आपको पूरा ऑफिस या जो भी पेमेंट उनका कंप्लीट करके GST रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका अदर फॉर्मेलिटीज हो गया, FSC अप्रूवल जो भी है करके आपको 6 महीने के अंदर ये कर देना है। If you feel that थोड़ा extension चाहिए तो you can apply to the DC office and DC office is मतलब not so strict on this, आपको कोई लेटर वेटर इशू नहीं करते हैं because they are not so, मतलब ये रूल पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो यूजुअली कोई रिमाइंडर नहीं आता है। बट अगर कोई यूनिट है जो उसको बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस में मानते हैं
they can apply to the DC office that due to this XYZ reason we are not able to execute the lease date. You are requested to please give us the extension of time limit. So DC will give the extension based on the reason which has been produced by the unit. So coming to the next condition which is mentioned in your LOA, that SEZ unit must submit a self-attested copy of IFSC approval. Only after that your LOA shall come into implementation. आप जो भी IFSC unit है आपका अपना LOA पढ़ोगे, conditions. When you go through the condition, this is the main condition which is mentioned in each and every IFSC unit. So आपका जैसे ही IFSC approval आ जाता है, you have to submit the same to the DC with a covering letter that under the condition number this, we are submitting a copy of IFSC approval. RCMC, हाँ एक let us send का एक एप्लीकेशन का डिस्कस बात हेलो करेंगे. हाँ सर, हम लोग को लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया है SEZ का. हम लोग को अभी IFSC का एप्लीकेशन और वो सब करना बाकी है. तो स्टिल जो भी कंप्लायंसेस है हम लोग को SEZ का वो कंप्लाई करने पड़ेगा कि एक बार IFSC आएगा उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे कंप्लायंसेस. नहीं करना पड़ेगा आपको. बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, RCMC लेना है, GST रजिस्ट्रेशन लेना है, अदर IEC जैसे अदर रेगुलेशन में जो लिखा है DGFT में वो फॉलो करना है. साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो. मतलब करना है, जो बिल्कुल करना है. SEZ यूनिट को फॉलो करना है वो हम लोग को सब कंप्लाई करना पड़ेगा. बिल्कुल करना है. RCMC जैसे मैं ये स्लाइड दिख रहा है अच्छा, आपको, वो लेना है आपको. It has nothing to do with your IFSC approval. ओके ओके, थैंक यू. अगेन जैसे ऑफिस बनाने के लिए सेंड चाहिए तो सेंड का भी एक अप्रूवल लेना होता है. कवरिंग लेटर, एक चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट दैट हैज टू बी टेकन. वो लेना ही लेना है. FSC अप्रूवल चलता रहेगा पर ऑफिस आपको रेडी करना है, प्रीमाइसेस रेडी करना है, बॉन्ड उससे पहले बॉन्ड करना है, RCMC लेना है, SEZ ऑनलाइन सिस्टम में जो भी है फॉर्मेलिटीज दैट हैज टू बी कंप्लीटेड वो करना है. RCMC का ये स्क्रीनशॉट है कैसे करना है. अप्लाई फॉर ये RCMC रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पे क्लिक करना है. अकॉर्डिंगली इसका अलग से ऑलरेडी वी हैव टेकन अ सेशन. यूनिट वांट्स वी कैन अगेन अरेंज द सेम सेशन फॉर RCMC रिन्यूअल और अप्लाइंग फॉर अ न्यू RCMC. मिस्टर कोई भी यूनिट है, दे कैन कॉल मिस्टर रवि, रीजनल डायरेक्टर है यहाँ पे EPCS के, एंड दे कैन कम एंड असिस्ट यू फॉर द सेम. And it request from the EPCS that payment should be made in Indian rupees क्योंकि उनके बैंक्स रिजेक्ट कर रहे थे. दिस इज द सर्टिफिकेट. ये किसका है? मेरा है आई थिंक, गिफ्ट SEZ का. हाँ, सो मेरे को भी आई हैव टू आल्सो कंप्लाई. दिस इज माय सर्टिफिकेट. यूनिट का थोड़ा अलग आएगा, उसके अंदर यूनिट का नाम आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसका LOA नंबर एंड ऑल दैट आएगा. थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा यूनिट का. एनी क्वेरी? ये जो प्रोसेस है वो DGFT के थ्रू करना है. ऑलरेडी डिस्कस ऑनलाइन. ये तो मैंने लाइव भी दिखा दिया क्योंकि अपना सेशन चालू होने से पहले देयर वर मेनी पीपल, सो आई थॉट दैट जो मैं काम कर रहा था लेट ऑल द पीपल सी हाउ क्वेरी है, क्वेरी का रिप्लाई कैसे करते हैं ऑनलाइन में. DSPF का था. इम्पोर्टेंट सर्कुलर नोटिफिकेशंस यू कैन रिफर ऑन देयर वेबसाइट. ये उनका स्क्रीनशॉट है, एक अलग सेक्शन है उनका SEZ ऑनलाइन का. देयर यू कैन रिफर ऑल द नोटिफिकेशन अपडेट्स जो भी SEZ ऑनलाइन के अंदर आते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा. एक ये फ्लो चार्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, सेम SEZ ऑनलाइन में करना है. जैसे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन वो SEZ ऑनलाइन में होगा, फिर बाद में पेमेंट होगा आफ्टर GST. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. SEZ ऑनलाइन का पेमेंट मेनी यूनिट्स आर डूइंग प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड GST. तो प्रॉब्लम ये आता है कि दे आर नॉट गेटिंग द एग्जम्पशन. तो इट इज एडवाइजेबल कि आप SEZ ऑनलाइन का जो पेमेंट है, when you obtain your bond and GST registration as an SEZ unit, उसके बाद ही करें तो ही आपका एग्जेम्पशन मिलेगा GST का, अदरवाइज नहीं मिलेगा. एनी प्रॉब्लम इन SEZ ऑनलाइन सिस्टम, नीरव जी को कॉल कर लीजिए. 8 सितंबर को
अविनाश विल बी टेकिंग SEZ ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जो न्यू यूनिट्स है और जो यूजर जिसको बनाने हैं, जैसे अभी डिस्कस किया था, दे कैन ज्वाइन दिस ट्रेनिंग सेशन एंड कोई जो भी प्रॉब्लम आता है वी कैन सॉल्व, और दे कैन स्टार्ट knowing how to use the system. Very easy. Coming to the next system, which is called IceGate. जैसे SEZ ऑनलाइन है, now the government of India has implemented IceGate. कहाँ है इसका नोटिफिकेशन? अभी थोड़ा मैं दिखाई देता हूँ. I'll just share another screen. It is available on the website gift.sez.com. वहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम बचा है. हाँ, ऑफिस मेमोरेंडम में है पब्लिक नोटिस नंबर 1. ओनली SEZ ऑनलाइन के अंदर ओनली 2 मॉड्यूल्स आर रिमूव्ड एंड आइसगेट के अंदर वो शिफ्ट हो गया. दैट इज बिल ऑफ एंट्री एंड शिपिंग बिल. शिपिंग बिल इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं, टू मोस्ट ऑफ द यूनिट्स. ओनली DTA क्लियरेंस हो गया, या फिर मेनली फॉर ये जो बुलियन ट्रेडिंग है, गोल्ड जो जाता है उनके लिए है. I will send this circular to all the units कल. तो एक और भी एक पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस नंबर 2. Any unit facing any difficulties, that is first and third Wednesday is fixed for the same. You can come and register yourself in the open house. पहले से आपको करना है, and it is not online, it is offline. आप यहाँ पे आके आपका जो भी है problems you can discuss with the development commissioner. It is scheduled on first and third of Wednesday usually, but अगर कोई भी change होता है तो UAC के अंदर, UAC का जो डेट है उसके बाद ओपन हाउस होता है, तो यू कैन कंसीडर द UAC डेट एज द डेट ऑन विच द ओपन हाउस विल बी शेड्यूल्ड. इट इज विजिबल ना, सबको दिख रहा है ना? Yes. ओके. So coming to the IceGate presentation back, IceGate के अंदर as it is being implemented by government of India, no charges are being levied. मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है it is free of cost. So आप स्टार्ट कर दीजिए. तो अगर सपोज इफ यू वांट टू फाइल, अगर आपको प्रोक्योरमेंट है, इंपोर्ट है, दैट इज प्रोक्योरमेंट तो नहीं, इंपोर्ट है या फिर DTA सेल है, देन यू हैव टू फाइल इन द IceGate सिस्टम गुड्स के लिए. दिस इज ओनली मेनली फॉर गुड्स. नाउ कमिंग टू सर्विस, सर्विस के अंदर देयर इज अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज. इंपोर्ट तो एग्जेम्प्टेड हो गया दिस नोटिफिकेशन, बट फ्रॉम इनपुट फ्रॉम DTA से अगर SEZ में आता है, देयर इज अ 66 services plus other services which is added in the services, that is only allowed. हाँ रमेश जी बोलिए, क्या क्वेरी है? विकास जी, ये जो आइसगेट में ट्रेनिंग एक अरेंज करा दे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वी आल्सो इन प्लानिंग टू हैव few assets like aircraft engines into KT. So IceGate registration, before we go for registration, we prefer to have that special training program so that we can guide our team members to proceed further. डेफिनेटली एक करा देते. ऑलरेडी एक ट्रेनिंग सेशन, दो नहीं 3 हुआ ना. आइसगेट ट्रेनिंग सेशन बे थे त्रण थे ऑलरेडी, एक हो चुका है, बट अगेन वी विल ट्राई के कर लेते हैं. हाँ सर, वी विल वो कम्युनिकेट थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. हाँ, क्योंकि Sure. है ना, ऑनगोइंग जो भी ऑनबोर्डिंग नया सेगमेंट आ रहा है, सो दैट दे आर आल्सो अवेयर, एंड फॉर दोज हु ऑलरेडी नो, फॉर देम इट वुड बी अ रेफ्रेशर ट्रेनिंग. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. थैंक यू सर, थैंक यू. So coming to the services, 66 services है जो डिफॉल्ट में है. अदर सर्विसेज आर अप्रूव्ड इन द UAC. वो US जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सर्विसेज है वो मेरे पास है. आई विल सेंड इट और आई विल अपलोड इन द वेबसाइट, एंड the units are requested to go through the services list of services, because these services are only eligible for zero rated supply.
अदरवाइज अगर कोई सर्विसेज इसके अलावा अगर आप प्रोक्योर करते हो, यू हैव टू पे द जीएसटी ऑन द सेम। अभी विद इन एसईजेड का भी थोड़ा वो क्लैरिफिकेशन है कि इट इज कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई, बट अंडर जीएसटी थोड़ा अभी R&D करना है कि जैसे सपोज एक्सचेंज सर्विस है, एक्सचेंज सर्विस इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, या ब्रोकर सर्विसेज, तो वो थोड़ा आप आपके कंसल्टेंट को बोले कि जो ब्रोकर्स हैं दैट सर्विसेज अगर इसमें नहीं है विद इन एसईजेड आप कर रहे हो, तो वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज अप्रूवल कमिटी और नॉट। क्लेरिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट, दिख रहा है विजिबल? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, it is visible. So the clarification within SEZ was given in on 21st August 2017 के within SEZ का भी within SEZ भी zero rated supply है under section 16. So ये services वाला थोड़ा है, unit are requested to go for the clarification and get the same clarified, और अगर required है तो get it approved. IC कोड अगेन मैंडेटरी है, सबको लेना है, जिसका लिया हुआ है उसको अपडेट करना है। Customs endorsement again is mandatory for duty free goods and services. क्वेरी आना ही आना है, जो भी आप फाइल करोगे एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, तो फाइल कर दो जितना जल्दी उतना अच्छा है, तो क्वेरी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आई कार्ड, हाँ, ऑल द यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एसईजेड आईडी कार्ड्स। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, फॉर्म विद द कवरिंग लेटर एंड अलोंग विद दैट फोटोग्राफ्स एंड आईडी प्रूफ आपको देना है टू द कस्टम्स ऑफिसर और ऑथराइज ऑफिसर वहां पे गेट पे, और वो प्रोसेस कर देंगे आपका। तो अभी तक हमने डिस्कस किया एक्टिविटी विच इज अलाउड इन योर एलओए सर्विस एक्टिविटी, वैलिडिटी 1 ईयर का होता है, जिसको एक्सटेंशन का भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अभी बहुत टफ है, जो नए ये डीसी है इज नॉट गिविंग एक्सटेंशन। जो भी एक्सटेंशन के लिए जाता है पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाते हैं, पर्सनल हियरिंग के अंदर अगर यूनिट का जस्टिफाइबल है देन ओनली extension is granted to the unit, otherwise not. Acceptance of terms and condition already discussed. Condition number bond for first condition जो usually हर एक unit के उसमें होता है, bond कम legal undertaking, we have discussed this. Additional bond भी हमने discuss कर लिया, bond monitoring unit का responsibility है। Separate GST registration of an SEZ unit is mandatory under the GST regulation. Eligibility certificate देख लिया, approval of list of services we have just recently discussed, RCMC हो गया, IC हो गया। Endorsement of invoice by customs authority that we have discussed, monitoring we have discussed, ID card हो गया। Other में commencement certificate, commencement certificate के लिए आपको एक लेना होता है, within 1 year का validity टाइम होता है, so you can go for the same, but commencement करने से पहले all the compliances has to be done, जैसे मैंने बोला bond है, RCMC, IEC, GST registration, IFSC approval, submission of the same to the DC office, and commencement में जब आप कोई भी यूनिट अप्लाई करता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज अटैच द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट अलोंग विद द कवरिंग लेटर। एलओए एक्सटेंशन जैसे हमने डिस्कस किया दैट इट इज अगेन वेरी स्ट्रिक्ट नाउ। ओके, जिसका एलओए रिन्यूअल है 5 years कंप्लीट हुआ है, इट हैज बीन सीन ऑब्जर्व दैट यूनिट आर नॉट अप्लाइंग बिफोर 2 months, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई विल रिक्वेस्ट द यूनिट जिसको 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, दे हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल फॉर्म F1 एज पर एसईजेड रूल्स। 2 महीना पहले करना है, आप 3 महीना पहले कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिले मत करना, बिकॉज डिले के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज अ रूल विच इज दैट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैज टू बी गिवन इफ एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर 2 महीना के बाद में।
prior to 2 months, it is advisable that you have to apply for renewal. For operational unit, SERF आपको फाइल कर देना है. It is in SEZ online system. Every 5th of every month you have to submit the same. ITS यूनिट अगर है कोई तो उसका सॉफ्ट टैक्स है. सॉफ्ट टैक्स के लिए अलग सेशन लिया हुआ है. एंड अगेन इट वाज बीन डिस्कस्ड इन द ट्रेनिंग सेशन दैट टाइमली आप कर दो सो दैट कंटिन्यूएशन ऑफ डिले अवॉइड कर सके. ये स्किप करते हैं, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है. अदर कंप्लाइंसेस इंस्ट्रक्शन नंबर 109, अगर कोई भी चेंज ऑफ नेम है या फिर एनी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है और डायरेक्टर चेंज है तो इंस्ट्रक्शन नंबर 109 है. प्लीज रिफर द सेम एंड कंप्लाई द सेम. जो उसके अंदर लिखा हुआ है आपको कंप्लाई करना है. सर्विसेज जो रेड में मार्क्ड है वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. अगर उसमें नहीं है डिफॉल्ट लिस्ट में, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज अप्लाई टू द DC office. DC office will put up before the approval committee, and once the approval committee approves the services, then only you are eligible for exemption. That is a audit para in the SEZ regulation. ज़्यादा डिस्कस नहीं करता अभी, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. Prakash bhai, sorry, what was the slide before this? 48. This one? पहले वाला, इसके पहले वाला सर जी. दिस ना सर्व के बाद ये ITS यूनिट के एप्लीकेबल है. सॉफ्ट टैक्स नॉट फॉर IFSC यूनिट्स. अच्छा अच्छा ओके. सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट करते हैं, एज दिस इज एन मल्टी सर्विस SEZ, देयर आर IT यूनिट्स आल्सो. गॉट इट. That is Thank the unit which are exporting software and all that, उनके लिए. Okay, thank you. For operational unit जो more than 1 year हो गया है, they have to submit APR. इसके अंदर this presentation थोड़ा अपडेट नहीं है. NFE relaxation का इसमें नहीं है. NFE relaxation has been given to IFSC unit. So APR के अंदर अगर आप नेगेटिव भी है तो there is no problem. The no show cause notice after 3 years will not be issued because for IFSC unit NAP has been relaxed. Again, अच्छा ये जो बिग यूनिट्स है, बड़े यूनिट्स है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू अप्लाई. अभी पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट अर्लियर जो पुराने यूनिट्स है उनको ये मिला था दैट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अगर है एप्लीकेबल तो दे कैन अप्लाई टू द कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड दे कैन ऑब्टेन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रेमिशन के लिए. Once you get that eligibility certificate under this act, electricity duty नहीं लगेगा. तो अभी थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, बट अर्लियर जो यूनिट्स है उनको मिल रहा था. तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू एंड अप्लाई तो कर ही सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको लेना है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन तो यू कैन अप्लाई द सेम टू द कंसर्न अथॉरिटी, दैट इज कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ब्लॉक नंबर 18, 7th floor, सेक्टर 11, उद्योग भवन, गांधीनगर, गुजरात. Sir, this you were telling, no, this IFSC positive NFE, is it for Okay. 5 years or 3 years? I mean, exemption is for the full. After 3 years, monitoring is done. 3 years के Okay. बाद there is a provision of that negative NFE का watch list में आ जाता है. But usually for IFSC unit इतना strict नहीं है. 5 साल में वो लोग अगर नेगेटिव होता तो they used to earlier levy penalty, show cause notice और वो पूरा करते थे, but वो अभी नहीं होगा क्योंकि now the relaxation has been given to the IFSC units. Okay, fine, sir. Thank you. Okay, so again I clarify this is only for sharing knowledge and educational purpose only. You are requested please refer the relevant notification rules regulations. The same is available on the website as discussed earlier. Any query you can send to Yogesh Bubade or me or to the EPSS का query@epss.in है और हमारा email address and DC email address OSD के email address is available on the website आ रही है slide पे, आप किसी को भी कर सकते हो. Sorry, sir, I didn't get it. अगर आपको कोई भी query है तो you can send to EPCS. EPCS has a team which will reply your queries. Okay, sure. The email address is query@epcs.in. or you can mail to us also. फोन कर लीजिए, मेल मत कीजिए. मेल DC को अथॉरिटी को कर दीजिए
that is dcsez_ahd@yahoo.co.in, osdgift@gmail.com. But I would advise you to send the first mail to the query@tpcs. Usually वहाँ पे आपको reply आ ही जाएगा. Public notice 1 and 2 already we discussed. कल mail कर दूंगा. So we end the session over here. Any queries? हेलो सर हाँ जी. प्रकाश भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी रेमिशन आफ्टर विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो मैटर है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, राइट? नहीं, electricity duty amount only. अच्छा, ड्यूटी, Expense नहीं. Only duty part. only the duty part. Correct. हाँ, So the duty part exemption is from the date of commencement, right? Right, yeah. Okay. सर एक और प्रकाश जी, एक और क्वेश्चन था बस कि ये जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, ये फंड मैनेजर या फंड मैनेजमेंट एंटिटी को भी देना पड़ेगा? Mandatory है. Yes, लेना है. मतलब फंड का स्ट्रक्चर है या फंड मैनेजर का, दोनों के अलग से लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिकॉज अंडर द SEZ यूनिट टू यूनिट ट्रांजैक्शन फंड का और विद इन SEZ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो FME या जो भी है, इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट. तो अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अंडर द DGFT रेगुलेशन, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो IC इज मैंडेटरी. ओके सर, थैंक यू. हेलो इतने सारे क्वेश्चंस हैं. हेलो PPT शेयर करने, वी डोंट शेयर द PPT. हाँ मैडम बोलिए. सर, एक आपसे जस्ट छोटी क्वेरी पूछनी थी. हम लोगों की ना सर्व फाइलिंग जो होती है 5 तारीख तक, तो ना दिस मंथ हमारे प्रिंसिपल ऑफिसर इज आउट ऑफ मतलब कंट्री ओनली, तो हम ईमेल पे सबमिट कर सकते हैं? इज देयर एनी अदर वे हाउ वी कैन सबमिट? देयर इज एन एक्सेल फॉर्मेट, वो तो आपको करना ही करना है. अगर ऑनलाइन नहीं करते हो तो देयर इज नो पेनल्टी. पहले earlier it was strict, but now it is not so strict. After COVID तो एकदम रिलैक्स हो गया. Earlier prior to COVID the system was to मतलब लॉक हो जाता था. They used to lock all the system, but after that वो अभी सॉल्व मतलब रिलैक्स्ड है, नो प्रॉब्लम. तो हाँ सर, पेनल्टी नहीं है. तो चलेगा ना अगर हमने ईमेल पे सबमिट किया तो? ईमेल में आप एक मेल डाल दीजिए टू द अथॉरिटी दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, वी विल नॉट बी एबल टू सबमिट द SCRF. द रिपोर्ट इज अटैच. आप मेल में अटैच करके उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए, मेल एक ड्रॉप कर लीजिएगा. ठीक है. और कोई वे आउट है क्या इसमें? बिकॉज ही विल बी नॉट अवेलेबल टिल 15th of October. तो यू कैन हैव अ मल्टीपल नंबर ऑफ अप्रूवल्स. अगर वो नहीं है तो यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट अप्रूवल जिसका DSC डिजिटल सिग्नेचर. यू कैन गेट द सिस्टम SEZ ऑनलाइन सिस्टम के अंदर उनका भी एक आप ID बना के आप अप्रूवर को एक और ऐड करके कर सकते हो सबमिट. ठीक है सर, चलेगा. थैंक सर यू. अपना ये SCRF ही फाइल करना रहेगा कि इसके अलावा और कोई 6 मंथली एनुअल कुछ होता है सर? मंथली है और फिर APR है. कोड डेवलपर के लिए क्वार्टरली रहेगा और हाफ ईयरली रहेगा. यूनिट के लिए नहीं है. यूनिट के लिए नहीं है ना, मतलब फॉर फंड और लाइक दैट? नॉट अंडर द SEZ रेगुलेशन. SEZ रेगुलेशन का SCRF है, MPR है, DSPF जो ड्यूटी फ्री गुड्स ऑफ प्रोक्योर करो DSPF फाइल करना है. वो उसमें कोई उसमें देयर इज अ टाइम लिमिट. हाँ, DSPF सर्विस में टाइम लिमिट नहीं है, बट फॉर गुड्स अगर आप गुड्स ले रहे हो तो विद इन 45 डेज आपको SEZ ऑनलाइन के अंदर वो एंडोर्समेंट के लिए, कस्टम एंडोर्समेंट के लिए डाल देना है. रिपोर्टिंग नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोर्समेंट ऑफ कस्टम्स. देयर इज अ 45 डेज टाइम लिमिट यूजुअली बीन फॉलोड बाय द कस्टम्स अथॉरिटी. वो थोड़े ये स्लाइड में रहेगा, नेक्स्ट स्लाइड में अपने डाल देंगे. Sir, and MPR, should we submit any hard copy or only the mail and the online in the SEZ online, mail and online, no hard copies. No hard copy. Okay, sir. मेरा एक क्वेरी है LAO को लेकर. बोलिए. सर, ये हमारे एंटिटी को ना एक ओरिजिनल LOA मिला था, वो एक्सपायर हो गया. फिर हमने एक और LOA एक्सटेंशन अप्लाई किया था विच वी गॉट फॉर 6 months. नाउ वी अगेन वांट, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इट्स फाइनल LOA दैट इज बीइंग ग्रांटेड. तो अभी इफ वी इंटेंड टू अप्लाई फॉर अनदर आई मीन 6 months या 1 साल का एक्सटेंशन, तो इज इट पॉसिबल? इज देयर एनी स्कोप? जैसे आपने बताया इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड DC इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो कुछ स्कोप है कि हमें मिल सकता है? एक्सटेंशन नहीं करते. नहीं करते हैं वो लोग, हाँ, क्योंकि वो हमें सीधे 6 का अप्रूवल ऑलरेडी कमेटी में मिल लेके गया. जाएंगे.
It is under the power of DC, but वो DC नहीं करता. He will take your application to approval committee. वहाँ पे जाके फिर वो पूरा आपको पर्सनल हियरिंग एंड ऑल दैट करके फिर अगर प्रॉपर आपका रीजन है तो कर देंगे, बट अगर प्रॉपर नहीं है, अगर आपने जानबूझ के डिले किया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो कर दे. ठीक है सर, अंडरस्टूड। प्रकाश जी, जी सर. ये सर ये चीज पता करनी थी कि एक कस्टम मंथली रिपोर्ट भी तो एक सबमिट करनी पड़ती है ना हाँ जी. मंथली, एससीआरएफ के अलावा। SCRF के अलावा क्या? कस्टम मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। MPR मंथली रिपोर्ट. हाँ, मंथली रिपोर्ट। हाँ, वो एक ही है. SCRF में खाली एक्सपोर्ट आ गया, MPR के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट आ गया, एक्सपोर्ट भी आ गया, तीनों आ गया. MPR के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट आ गया. SCRF के अंदर खाली एक्सपोर्ट रिपोर्ट होता है. एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग क्यों होता है? बिकॉज इट विल गो टू RBI. RBI विल डू द मॉनिटरिंग के भाई कहीं कोई वो हवाला वाला जो है वो जो था वो तो नहीं हो रहा है ना. जी जी जी, तो ये दोनों रिपोर्ट फाइल करनी है ना, एमपीआर भी और ये भी। हाँ, दोनों करना है. MPR भी करना है और आपको SCRF भी करना है. प्रकाश सर, ये आइस गेट के ऊपर मुझे क्वेश्चन था, ये रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो वहां पे इश्यू आ रहा है कि ईमेल में हमें ओटीपी नहीं मिल रहा। सबका ही है, आपका अकेले का नहीं है. हाँ, सो उसके लिए कोई वी हैव ऑलरेडी रेज्ड. हाँ, उसके अंदर हर बार वहां से एक ही रिप्लाई आता है कि टिकट रेज कर दीजिए एल्डस पे, मेल कर दीजिए एंड दे विल सॉल्व. वहां से एक ही रिप्लाई आता है. अगेन वी विल ट्राई टू हैव अ ट्रेनिंग सेशन. दे आर गोइंग टू लॉन्च SEZ 2.0, एक दूसरा मॉड्यूल बना रहे हैं वो लोग, बट अभी तो वो लाइव नहीं है. ओके, उसका अभी ट्रेनिंग सेशन हुआ था, वो अभी लाइव नहीं है. जैसे ही वो लाइव हो जाए आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए. ओके, सो देयर इज नो इश्यू इफ आइस गेट में अभी तक नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन। नहीं, अगर आपका इंपोर्ट या बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है. बट अगर ऐसा कोई एक्टिविटी है कि आपको DTA सेल करना है या इंपोर्ट करना है तो आई विल रिक्वेस्ट टू अप्रोच और मेल द कंसर्न अथॉरिटी, दैट इज SO गिफ्ट SEZ एंड द डेवलपमेंट कमिश्नर टू के भाई हमने इवन टिकट रेज भी किया है. वी हैव मेल्ड टू EPC सॉरी आइस गेट इवन दो द प्रॉब्लम इज नॉट बीन रिजॉल्व. ओके, आप उनको मेल डालते रहिए. ओके, ओके, वी हैव मेल दैट हेल्प डेस्क ईमेल आईडी। राइट सर. एक और क्वेरी था. हेलो हेलो सर, प्रकाश जी, हमारा can एडमिन you आईडी, explain the सर ये एडमिन आईडी हमारे एंटिटी का ना वो लॉक हो गया है, तो मैंने एक मेल डाल दिया sezinfo@nsdl.com. वो वहां से हम रीसेट हो जाएगा ना? हमने मेल डाल दिया है. हो जाएगा. अगर नहीं होता है तो अगेन मेरे को CC रखे हुए नीरव, जो मैंने मेरा प्रेजेंटेशन था उसमें नीरव वाला है, नीरव का कांटेक्ट नंबर है, उसको भी डालिए और SEZ इन्फो को CC मेरे को डालिए. आई विल आल्सो फॉलो अप. हो जाएगा, हो जाना चाहिए. कब डाला? 1 घंटे के अंदर कर देते वो लोग तो. अच्छा, हमने कल डाला था, अभी तक हुआ नहीं है. नहीं, तो फिर आप एक काम करो, नीरव को डाल दो मेल और उसको फोन कर दो. कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल ऑन द फोन कि नहीं हुआ है. सर Within 1 कॉन्टैक्ट day वो कर डिटेल्स आप देते हैं. शेयर कर दोगे क्या प्लीज? इट इज अवेलेबल, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. अच्छा ठीक है, नीरज सर का. ठीक है सर. हाँ, सर, मेरे ये को जो व्हाट्सएप में मंथली शेयर कर दीजिए. आई विल सेंड यू. ओके ओके सर. हाँ सर सर, अपना लीजिए. ये जो मंथली फाइलिंग्स है और जो एनुअल है सर, उसके लिए एक बार थोड़ा फ्री से ब्रीफ कर देंगे कि क्या क्या कर देंगे. हाँ बिल्कुल कर देंगे. नो प्रॉब्लम. वी कैन हैव अनदर सेशन. नो प्रॉब्लम. डिटेल में कर देंगे. APR का एक अलग से डिटेल में ले लेंगे. सर न्यू एडमिन यूजर आईडी बनाने के लिए सर APR कैन बी फाइल ऑफलाइन आल्सो. SEZ ऑनलाइन जो एडमिन का क्वेरी आ रहा है उसके लिए 8 तारीख को वी हैव रिक्वेस्टेड. 8 तारीख को ट्रेनिंग सेशन है, आप ज्वाइन कर लीजिए. प्रकाश जी, उससे पहले, हाँ उससे पहले भी करना है तो वी विल हैव अ ट्रेनिंग 1-to-1 विद नीरव. प्रकाश जी, एक क्वेरी था. न्यू यूजर आईडी बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है? क्या बनाने के लिए? एग्जिस्टिंग एडमिन जो है उनका वो रिटायर कर गए, तो नया एडमिन यूजर बनाना है. एडमिन नया नहीं बनता, एक ही होता है. जो आपको पहले से जो एग्जिस्टिंग है वो रिटायर्ड हो गया है बैंक से, तो फिर अभी कैसे? अगेन हाँ, लेट मी चेक विद द NSDL गाइस. OTP का हमें ईमेल अपडेट एंड ऑल दैट वो शायद कर पाएंगे. वो नाम वही रहेगा, खाली ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज करके यू कैन यूज दैट एडमिन. वो तो चेंज कर दिया है, बट अभी अब बैंक के रिकॉर्ड में उस नाम से कोई नहीं है, तो फिर हमारे ऑडिट में सिंस ही इज नॉट अवेलेबल फॉर
हाँ, तो अगर चेंज हो गया तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू। मेकर और अप्रूवर में थोड़ा वो रहता है, अप्रूवर में मेनली रहता है बिकॉज वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लगता है, सो दैट इज द मेन। मेकर एंड चेकर तो दैट कैन बी क्रिएटेड, एडमिन यूजर जो है हाँ, वो नहीं क्रिएट कर पाएंगे, वो एक ही रहेगा। या लेट अस हैव आप कल मेरे को कॉल कर लीजिए एट 11 o'clock, वी कैन हैव अ 1-to-1 सेशन विद नीरव एनएसडीएल गाय, वो आपका ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। Sure, sir. I will call you at 11. Thank you. ओके Sir, can APR be filed offline also? ऑफलाइन ही भी करना है, देखो अगेन आई रिपीट, ऑफलाइन तो करना ही करना है, ऑनलाइन भी करना है, दोनों करना है सर। ऑफलाइन Basically, इसलिए करना है क्योंकि ओरिजिनल सीए सर्टिफाइड जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीए एपीआर हैज टू बी सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सर्टिफिकेशन ओरिजिनल आपको डीसी ऑफिस में सबमिट करना है, दोनों करना है। okay, sir. If there's some delay in online submission, if there is an issue, ऑनलाइन इतना ज्यादा वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं करते एट प्रेजेंटली। क्या डिले okay, हो sir. गया आपका? NS सर अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है सेज ऑनलाइन पे, दैट्स व्हाई। कोई ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है, कर लो तो अच्छा है, जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है। ओके सर। प्रकाश जी। जी सर। So sir, I just wanted to ask, so any FME is operating here in a branch form, and if any changes is happening in their parent company, not a parent company, but in a, you know what to say is that in the main organizations, like change in shareholder or change in director, so that entity is required to take a approval of DC Development Commissioner in that case, or नहीं, जो एलओए है, जो यूनिट को एलओ इशू हुआ है, नॉट टू द पेरेंट कंपनी, जो जिस यूनिट को एलओ इशू, वो कंपनी के अंदर अगर चेंज हो रहा है तो ही आपको इंस्ट्रक्शन 109 विल बी एप्लीकेबल। that I understand, but that LO is been issued to the branch, correct? So that is the extension form of that company. So the IFSC branch is the extension form of that company. So it is they have the office in the IFSC and they have issued say DC has issued the LOA to that branch. So in that branch, if then in any company of that branch, if any director or shareholding pattern is getting changed, so in that case, do we require to take approval of DC? डायरेक्टर चेंज में खाली इंटीमेशन कर दोगे चलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर कुछ मेजर चेंज है तो आप एक लेटर तो दे ही दीजिए वहां पे डीसी ऑफिस में। But see, it is not governed under the SEZ Act. So that branch is governed under the SEZ Act. So still that company is required to take approval of DC. This is the concern. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो कंपनी जिसको एलओ इशू है, अगर वही कंपनी इज ऑल्सो हैविंग द सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न, वही है डायरेक्टर्स, एंड अगर उसमें चेंज हो रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सेंड। और अगेन मैंने जैसे बोला है, इसका एक क्वेरी ईपीसीएस में डाल दीजिए, query@epcs.in, वहां से आपको रिटर्न में रिप्लाई आ जाएगा, जो मैंने बोला वही है वैसे तो। फिर भी आप डाल दीजिए, CC2 मेरे को रख दीजिएगा, एंड डीडीजी अगर नहीं होता तो वी विल, आ ही जाता है 24 में, आज में रिप्लाई आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में रिप्लाई आ जाएगा। Sure. And could you please help me to provide the regulation or rule number for the MPR, because I've tried to search that on a web SEZ rule, but I didn't get anywhere about mentioning that is mentioning that unit has to file the MPR. SEZ रूल्स के नहीं है, देयर इज अ सर्कुलर। पहले आई थिंक यूनिट के बॉन्ड में था कि अगर डेवलपमेंट कमिश्नर कोई भी पीरियोडिकल रिपोर्ट मांगता है तो यूनिट हैज टू सबमिट अंडर द फॉर्म, आपने जो बॉन्ड दिया ना, सो द डेवलपमेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करना है टू द हायर अथॉरिटीज के भाई एसईजेड में से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। सो यूजुअली एक बहुत पुराना सर्कुलर है जो डीसी ने किया था, वो कंटिन्यू है, वही कंटिन्यू हो रहा है। एसईजेड रूल में ऐसा नहीं है, बट देयर इज अ बॉन्ड फॉर्म है अंडर द एसईजेड रूल which says that any DC can ask for any periodical reports from the units. So under that you have to submit the same. Okay, so to that circular we need to file MPR, because there's no such requirement coming from the SEZ rule that we need to file to MPR. Specific SEZ rule नहीं है, हाँ, नहीं। Understood. Yeah, thank you so much. प्रकाश जी। जी सर। हेलो। हेलो चिराग जी बोलिए। प्रकाश, अपने को ये कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन जो सर्टिफिकेट है तो विद इन 1 ईयर लेना है, मतलब अपने पास ये जो आईडी कार्ड्स और जो भी आगे आपने बोला डॉक्यूमेंट्स वो सब आ गए, फॉर एग्जांपल आईसी आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आरसीएमसी आ गया है,
तो उसके बाद लास्ट में रहता है ना सर ये कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन? ऑब्वियसली हाँ, बिकॉज उससे पहले आप कमेंसमेंट कर ही नहीं सकते। ऑल द डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आरसीएमसी, it is required IFSC approval and submission of the same is required to be submitted to the DC office. After all completion, then only the unit can commence the business. Yes. So answer is yes. and it's apply ऑनलाइन या ऑफलाइन सर? वो भी डॉक्यूमेंट्स जो जैसे अपना ये दोनों SEZ दोनों ऑनलाइन दोनों दोनों देना है सर, दोनों देना है, ऑफलाइन भी देना है और ऑनलाइन भी देना है। सो प्रकाश जी, एक एलओए रिलेटेड क्वेरी था। हाँ शैलेश जी बोलिए, शैलेश जी बोलिए। यस सर, मेरा हो गया अभी। ओके हाँ। हाँ, मेरा एक एलओए रिगार्डिंग क्वेरी था। आई थिंक उसमें कैसा है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिट्स विल बी एबल टू कनेक्ट। अप्रैल 2022 में जो है ना अपना इफ्सका का फंड मैनेजमेंट रेगुलेशंस आया था, तो देयर आर मेनी यूनिट्स हु हैव टेकन द एलओए प्रायर टू दैट। सो उसमें ये रेगुलेशंस का मेंशन नहीं है बिकॉज इट्स अ ब्रॉडर रेगुलेशंस। ब्रॉडबैंडिंग मैंने जैसे बोला, आप एडवाइजेबल है कि आप ब्रॉडबैंडिंग डाल दो। सेम यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द क्वेरी, रिटर्न में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इट इज एडवाइजेबल कि आप ब्रॉडबैंडिंग अप्लाई कर दो। बिकॉज द ओल्डर रेगुलेशंस का रेफरेंस वो ऑथराइज ऑपरेशंस में है, दैट्स द ओनली कंसर्न। सर एडवाइजेबल है क्योंकि आईजीएसटी एक्ट भी हैज बीन अमेंडेड विच मेंशन ऑथराइज ऑपरेशन, जो आपके एलओए के अंदर लिखा होता है। तो कोई क्वेरी नहीं आए अंडर जीएसटी रेगुलेशन फॉर जीएसटी एग्जम्पशन, इट इज एडवाइजेबल कि आप एलओए ब्रॉडबैंड के एप्लीकेशन तो कर ही दो। लेट देम डिसाइड कि आपको देना है कि नहीं देना। डीसी ऑफिस जैसे एसबीआई के केस में बोला था कि भाई नॉट रिक्वायर्ड, देयर वाज सम, जैसे मैंने बताया ना आरबीआई अर्लियर द एलओए व्हिच मेंशन्स अबाउट आरबीआई रेगुलेशन एंड ऑल दैट। तो इट इज अप टू द अप्रूवल कमिटी ऑफ डीसी ऑफिस, बट आपको एप्लीकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर ब्रॉडबैंडिंग और एडिशन ऑफ सर्विसेज और अमेंडमेंट इन एलओए। ओके, थैंक्स। Sir, there is a query that senior हेलो management प्रकाश structure. सर। हाँ इसी से जो नरेंद्र जी बोलिए, मैडम आपको बाद में लेते हैं। Sir, हाँ if senior CMD sir and ED sir they have been retired, so we have to intimate to sales commissioner about that also. अगर आपने जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऐप के अंदर उनको डाला है एज अ डायरेक्टर है या जो भी है, तो यस यू हैव टू इंटीमेट द सेम टू द डीसी ऑफिस। Okay, sir. हाँ मैडम बोलिए। सर ये एपीआर जो आपने बताया कि वी हैव टू डू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो ऑफलाइन विल बी डन बाय द सर्टिफाइड सीए एंड फॉर द ऑनलाइन वी हैव टू गो टू द एसईजेड साइट थ्रू मेकर और मेन एडमिन, हु विल डू दिस? यूनिट का लॉगिन अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। आई थिंक पहले मेकर से है एंड देन इट गोज टू अप्रूवर, अप्रूवर फिर अप्रूव करेगा अपलोड करने के बाद में। सर कैन यू जस्ट आपका टेल मी द आपका लॉगिन एग्जैक्ट है क्या? स्टेप्स? आप मेकर में जब लॉगिन करोगे तो हाँ यू विल बी सीइंग वेरियस एप्लीकेशन, उसके अंदर एपीआर आ रहा है, देन यू कैन फाइल द सेम फ्रॉम द मेकर। okay, because I can see the previous first block period all the APR data, but for the fresh block period I am not able to see, neither I can add the data for the this financial year. एक काम करते हैं, कल आप 11:30 को कॉल कीजिए। आई विल वी विल टेक एन लुक इनटू योर आईडी, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करना है। Okay, ओके thank you. प्रकाश सर, बोलिए मैम। सर हमारा एक्चुअली आईआरडीए का लाइसेंस ड्यू है दिसंबर 2020 में, तो हमको वो लाइसेंस रिन्यू हो जाए उसके बाद गिफ्ट सिटी के लिए अप्लाई करना है कि फिर दोनों साथ में करना है सर? एसईजेड में भी रिन्यूअल है क्या आपका? हाँ, हमको 2019 में गिफ्ट सिटी का लाइसेंस मिला था सर, बट अभी हमारा आईआरडीए का लाइसेंस ड्यू है 2023 डोंट में। मिक्स। हाँ वो आईएफएससी का पैरेलली आप करते रहो जो भी करना है। एसईजेड रेगुलेशन के अंदर जैसे आपका पीरियड 5 इयर्स है, तो उससे 2 महीना पहले आई वुड एडवाइस को 3 महीना पहले आप फॉर्म जो प्रिस्क्राइब फॉर्म F1 है उसमें आप एप्लीकेशन कर ही दो फॉर रिन्यूअल। बट हमारा लाइसेंस ही हमको दिसंबर में मिलेगा आईआरडीए का, क्योंकि वो उसके बेस्ड नहीं पे ही नहीं, हमको। वो क्वेरी आने दो ना, एप्लीकेशन तो कर दो ना, आप कंप्लाइंस तो कर दो। लेट देम रेज द क्वेरी कि आपका आईएफएससी अप्रूवल एक्सपायर हो गया है, प्लीज गिव अस द जो भी है, क्वेरी आने दो। ओके, बट 2 महीना पहले तो एप्लीकेशन रिन्यूअल का फाइल कर देना। ठीक है उसके अंदर यू डोंट हैव टू अटैच द आईएफएससी अप्रूवल। ओके। सो एनी अदर क्वेरीज? और अभी
वी विल नॉट बी शेयरिंग द पीपीटी बिकॉज ये अपडेटेड नहीं है, मेरे को अपडेट करना बाकी है। एंड अगेन वी विल अगेन ट्राई टू अरेंज द सेम SEZ कंप्लायंस एज वेल एज द आइसगेट ट्रेनिंग सेशन भी ट्राई करते हैं कि वो ट्रेनिंग सेशन कर ले। हाँ मैम, ये सर कोई क्वेरी था, बोलिए। हाँ प्रकाश जी, हमारा एक LUT का हमने BLUT हमारा ऑफलाइन तो हो गया है, फिर वो हमने ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है, बट अभी वो 3-4 महीने से वो पेंडिंग बता रहा है। रिक्वेस्ट आईडी मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं कंसर्न अथॉरिटी को बोल के करवा लेते हैं, हो जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर हमको वो जो भी प्रोक्योरमेंट हमने की है वो उसका फाइल करना है, invoices यस। हाँ करना पड़ेगा ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद ही होगा ना, क्योंकि अभी वो हाँ हाँ पेंडिंग हाँ, है। तो इसलिए आई जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर कोई भी डिले है तो आप एक मेल तो डाल ही दो कि सर हमारी एप्लीकेशन है, इट इज पेंडिंग विथ योर साइट एंड वी आर नॉट एबल टू फाइल द DTA प्रोक्योरमेंट ऑफ DSPF। आप एक कंसर्न अथॉरिटी को CC टू कस्टम्स मेल कर ही देना है। ओके ओके ठीक है। ओके, देयर आर 2 भाविन सोनी, कुछ क्वेश्चन है भाविन जी? नहीं बस वही, ये अभी मेरा ही था। अच्छा अच्छा, आपका ही था, ओके फाइन। ओके, थैंक यू। प्रकाश जी, अभी जो 8 तारीख को ट्रेनिंग सेशन है उसमें ये फाइलिंग्स और ये सब का मतलब डिटेल्स ब्रीफ किया SEZ जाएगा। ऑनलाइन के लिए है। हाँ, SEZ ऑनलाइन के लिए अगर आप जो अवनीश यादव है और नीरव है, आप उनको बोलेंगे कि मेरे को पर्टिकुलर मॉडल पे थोड़ा ज्यादा आप कवर कर लो, तो आप अभी से पहले उनको बता दीजिए।